Now coming to the sedimentary rocks. Sedimentary rocks are types of rock that are formed by the deposition and subsequent cementation of that material at the earth's surface and within bodies of water. Sedimentation is a collective name for processes that cause mineral or organic particles to settle in place. The particles that form a sedimentary rock by accumulating are called sediment. Before being deposited, the sediment was formed by weathering and erosion from the source area and then transported to the place of deposition by water, wind, ice, mass movement, or glaciers, which are called agents of denudation. सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत आसान है समझना कि वो लेयर बाय लेयर, जैसे एक लेयर आ गई, कहीं से इरोजन हुआ किसी सॉइल का, पार्टिकल्स का, वो जो है पानी के साथ आ गए कहीं पर, और वो पानी के थ्रू जो है वहां पर वन बाय वन लेयर उनकी लगती जा रही है. तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बाद फिर वो एक प्रेशर उनके ऊपर डेवलप हुआ, एक टाइम के बाद जो है वो एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आपका वो देखते हैं मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो लेयर के फॉर्म में निकलती है, ऐसी ही ये रॉक्स बनती है. इनमें लेयर्स होती हैं, आप जब क्लोज उसका व्यू देखेंगे तो आपको नजर आएंगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट व्हाइट लेयर, ब्राउन, मतलब डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में. तो उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. इसमें पिक्चर भी है मेरे पास, इससे समझ में आएगा. यहाँ पर इग्नियस रॉक मैंने बताया जैसे कि लावा निकलता है तो उसमें पोरस थोड़ा सा आपको इस टाइप का टेक्सचर मिलेगा, लेकिन आपको सेडिमेंट्री में ना लेयर्स नजर आएंगी, जैसे यहाँ पर दिखाया है इन्होंने इसमें. ये तो इग्नियस है और ये आपका जो है इसमें लेयर्स क्लियरली सीन है, तो डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही हैं. तो वन ओवर अनदर जब होती रही और फिर कॉम्पेक्शन हो गया तो ये कन्वर्ट हो गई सेडिमेंट्री रॉक में. ठीक है. ठीक. Sedimentation may also occur as minerals precipitate from water solution or shells of aquatic creatures settle out of suspension. The sedimentary rock cover of the continents of the Earth's crust is extensive. 73% of the Earth's current land surface, but the total contribution of sedimentary rock is estimated to be only 8% of the total volume of the crust. Sedimentary rock are only a thin veneer over a crust, consisting mainly of igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks are deposited in layers as strata, forming a structure called bedding. The study of sedimentary rocks and rock strata provides information about the subsurface that is useful for civil engineering, for example, in the construction of roads, houses, tunnels, etc. Sedimentary rocks are also important sources of natural resources like coal, fossil fuels, drinking water, or ores.